DC coupled amplifier. Today's session we will be discussing about DC coupled amplifier. It is also called as direct coupled amplifier. As the name suggests, direct coupled or DC amplifiers, the main function of this DC coupled amplifier is it is used to amplify DC signals. It is used to amplify DC signals. Means what? DC signal means we say DC signal is 0 hertz. But practically this signal, this amplifier is used to amplify very low frequencies. So the frequencies which are from 0 to 10 hertz, these frequencies are very low frequencies. So these frequencies are being amplified by using the direct coupled or DC amplifier. Now you will observe that it is basically a two-stage. It is a two-stage DC coupled amplifier. So if we have seen RC coupled amplifier or a transformer coupled amplifier, then we have observed that there is a transformer at this place, at this line. I've drawn it a bold line, thick line, to just show that at this place there is no capacitor or there is no resistor or no transformer. The output of the first stage is directly coupled to the input of the second stage. So there is no capacitor, no inductor or no transformer. And even if we try to use the capacitor, inductor or transformer, then the size of the circuit, the overall size of the circuit will become very, very large, because to operate a transformer at a low frequency, to operate an inductor or a capacitor at a low frequency, we need to increase the size of capacitor, inductor और transformer. तो पॉइंट ये है कि यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं टू स्टेज डायरेक्ट कपल्ड डीसी एम्पलीफायर, दो स्टेजेस है. यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी कैपेसिटर, इंडक्टर या फिर ट्रांसफार्मर कपलिंग के लिए यूज नहीं किया है. अगर हम लोग यहाँ पे कैपेसिटर, इंडक्टर या फिर ट्रांसफार्मर यूज करेंगे तो इनका साइज, कंपोनेंट साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा. जैसे जैसे कैपेसिटर का साइज बढ़ेगा उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन डिक्रीज होगा. तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, हमारी फ्रीक्वेंसी रेंज तो बहुत ही कम है, 0 से 10 हर्ट्ज की ही फ्रीक्वेंसी है. इन फ्रीक्वेंसीज पे अगर हमें इन फ्रीक्वेंसीज को अगर हमें एम्पलीफाई करना है तो हमें इन कंपोनेंट्स की जरूरत नहीं है. ओके, तो ये जो फ्रीक्वेंसीज है ये जनरली बायोमेडिकल सिग्नल्स होते हैं, बायोमेडिकल या फिर बायो टेलीमेट्री सिग्नल्स, यानी ऐसे सिग्नल्स जो हमारे बॉडी से जनरेट हो रहे हैं, जो दिमाग से जनरेट हो रहे हैं, हार्ट से जनरेट हो रहे हैं, हमारे बॉडी के किसी पार्ट से जनरेट हो रहे हैं, वो जो सिग्नल्स होते हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ही कम होती है, 10 हर्ट्ज, 12 हर्ट्ज, उससे ज़्यादा नहीं हो पाती है. इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे रेंज लिखा 10 फ्रॉम 0 to 10 हर्ट्ज. अब यहाँ पे जो बायसिंग है हम लोग उसकी बात करेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग लगाया हुआ है दोनों स्टेज पे. कहीं कहीं पे हम लोग देखेंगे कि ये जो है R1 R2 सेकेंड स्टेज में वो लोग यूज नहीं करेंगे, वो लोग डायरेक्टली फर्स्ट स्टेज का बायसिंग कंप्लीट देंगे एंड सेकेंड स्टेज को डायरेक्टली कपल करेंगे. So this diagram is also true and other diagrams is also true, but I find this diagram is the most appropriate diagram. The output of the first stage का output जो point number से हम लोग उसको नाम देंगे C1. So the collector से जो हमें output मिलेगा वो directly point B1 input रहेगा और जो output मिलेगा, final output, वो हमें collector terminal पे मिलेगा. So this is about the
कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे अभी हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन डिस्कस किया है। C1 आउटपुट है फर्स्ट स्टेज का, फर्स्ट स्टेज का आउटपुट वी हैव गिवन टू द इनपुट ऑफ द सेकेंड स्टेज, ट्रांजिस्टर Q2 के इनपुट में दिया है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे यहाँ पे एमिटर टर्मिनल ग्राउंड किया है, E2 E1 एमिटर टर्मिनल जो ग्राउंड किया है, और यहाँ पे बेस 1 पे हम लोगों ने दिया है इनपुट। मैं इसको थोड़ा सा रीनेम करूंगा, यहाँ पे हम लोग B2 लिखेंगे। ओके, सो वी हैव गिवन द इनपुट टू द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर Q1. So Vin is the input signal. The frequency is 0 to 10 Hertz or at the most 20 Hertz. Now we will discuss the working of the two-stage direct couple amplifier. To discuss further about the working of the two-stage direct coupled amplifier, one more observation I would like to tell you that there is no input capacitor, no coupling capacitor between the two stages, and no coupling capacitor at the output stage. We have directly obtained output voltage at the collector terminal of the transistor Q2, and RL is the load. This RL or load can be any speaker or any other device where amplification is required, or any display on it which requires the where we can display the signals. So यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी इनपुट कपलिंग कैपेसिटर जो C in होता है वो यूज नहीं किया है, कोई भी कपलिंग कैपेसिटर यूज नहीं किया है दो स्टेज को कपल करने के लिए, और ना ही कोई कपलिंग कैपेसिटर हम लोगों ने यूज किया है किसी भी स्पीकर को जोड़ने के लिए, कोई भी कपलिंग कैपेसिटर्स का यूज नहीं किया है। Now the input signal, that is Vin, is applied directly to the base terminal of transistor Q1. This is the first stage, transistor Q1, and the transistor Q1 amplifies the signal, and the output of the first stage is obtained across the collector terminal C1 of the first stage. So जो भी इनपुट सिग्नल हम लोग देंगे, दैट इज मान के चलते हैं हमारा Vin इनपुट सिग्नल है, इसे हम लोगों ने अप्लाई किए बेस टर्मिनल ट्रांजिस्टर Q1 के, और हमें ये इनपुट हो गया, और हमें आउटपुट जो है वी विल ऑब्टेन द आउटपुट एट कलेक्टर टर्मिनल ऑफ ट्रांजिस्टर Q1. So amplified signal from the first stage is obtained at collector terminal C1 due to normal transistor action. So the VCC is providing the biasing, and R1, R2, R3, R4, R1, R2, R3, R4 for the second stage as well as for the first stage. These resistors are used to provide the DC biasing. ये जो भी resistors हम लोगों ने यहाँ पे यूज किए हैं, ये सारे के सारे resistors DC biasing करने के लिए यूज कर रहे हैं, ट्रांजिस्टर को प्रॉपरली बायस करने के लिए यूज कर रहे हैं। जब तक ट्रांजिस्टर को प्रॉपरली बायस करेंगे नहीं तब तक हमारा ट्रांजिस्टर ठीक से काम करेगा नहीं, सिग्नल एम्पलीफाइड होकर हमें कलेक्टर टर्मिनल के अक्रॉस नहीं मिलेगा। दिस इज कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, इसलिए एमिटर टर्मिनल्स को हम लोगों ने ग्राउंड किया है। सो आई रिपीट अगेन, ड्यू टू द नॉर्मल ट्रांजिस्टर एक्शन, the input signal Vin is amplified, and the amplified output signal is obtained at collector terminal, that is C1 of transistor Q1. Now the voltage at point C1 or the collector terminal of transistor Q1 is nothing but voltage across the resistor R3, that is the कलेक्टर रेजिस्टर। कलेक्टर टर्मिनल रेजिस्टर के अक्रॉस में हमें फर्स्ट स्टेज का आउटपुट मिलेगा। मींस हम लोग कहाँ मेजर करेंगे, इस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट कहाँ पे, ये रेजिस्टर का टर्मिनेटिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे अगर जब हम लोग वोल्टेज मेजर करें, इट वी आर मेजरिंग द वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू दिस टू टर्मिनल्स।
from this point to this point. Now, from the first stage, we are obtaining the output voltage at this collector resistor. Now, this output voltage is now capable of driving the second stage. So, जो भी आउटपुट मिल रहा है फर्स्ट स्टेज का, ये आउटपुट इस सेकेंड ट्रांजिस्टर के फॉरवर्ड बायस करने के लिए काम में आएगा और यही इनपुट सिग्नल हमारा एम्पलीफाइड होकर सेकेंड स्टेज के कलेक्टर रजिस्टर के अक्रॉस हमें मिलेगा. सो द पॉइंट इज द वोल्टेज ऑब्टेन्ड at the collector resistor of the first transistor drives the base. इनपुट कहाँ जा रहा है? फर्स्ट स्टेज का जो आउटपुट है वो इनपुट जा रहा है बेस टर्मिनल ऑफ ट्रांजिस्टर Q2. So the voltage obtained at the collector terminal is driving the base of second stage transistor Q2, and the amplified signal due to the normal transistor action of this Q2 is obtained across the collector resistor of the transistor Q2. So once again I will repeat, we are obtaining the output of the first stage at point C1. This output is driving the base 2 of the transistor Q2, and due to the normal transistor action the signal is amplified and we are obtaining the final output at the point C2, that is collector terminal of second stage transistor across the resistor R3. Now this output can be directly connected to the load resistor, and the load resistor means it can be any output device. It can be a speaker or a display unit which will display the video signal on the video display unit. So once again I will repeat the working of this direct coupled two-stage direct coupled amplifier. First, Vin is the input. This input is given to the base 1 of the transistor Q1. Due to the normal transistor action of the transistor Q1, we will obtain the output signal at resistor which is connected to collector, and hence the voltage will be measured at collector terminal of the first stage transistor. The name given is C1. Then the output obtained at the collector terminal of transistor Q1, that is C1, is given as the input to base of the transistor Q2. And again, due to normal transistor action of the second stage transistor, the amplified signal is obtained at C2. C2 is the collector terminal of transistor Q2. And whatever we are obtaining the output, it is the amplified DC signal. The frequency range is 0 to approximately 10 or 15 Hertz. The range is, we can say 0 to 20 Hertz. This output is obtained and it can be given to the speaker, or we can say a display unit, visual display unit, wherever we will see the output, or even a graph paper, any output device. Graph paper connected with pointer, pen pointer. One thing to be noted, we are using a voltage divider biasing for both the stages. R1, R2 forms a voltage divider network for the first stage. R1, R2, this R1 and this R2 forms the voltage divider network for the transistor Q2. This resistor combination or resistor network is used to provide the biasing. I am again using the word DC biasing, and this DC biasing is temperature independent. Temperature independent. That's why we are using the voltage divider biasing.
voltage divider biasing. This type of biasing network is called as voltage divider biasing. And we are not using any coupling capacitor Cin for to couple the input signal to the base. We are not using any coupling capacitor to couple the output of first to the input of the second stage. Neither we are using output coupling capacitor to couple a load with the collector terminal. Neither we are using any transformer, neither we are using any inductor. Because the size of these components, capacitors and inductors and transformer, become significantly large as the frequency is decreased to 20 or less than 20 Hertz. So this is all about the working of two-stage direct coupled amplifier. Now we will study the frequency response of this two-stage direct coupled amplifier. Here I have drawn the frequency response graph for a two-stage DC coupled amplifier. So again I will repeat, frequency response is a plot of frequency versus voltage gain. It is a plot of frequency on the x-axis and voltage gain on the y-axis, and generally we are using a semi-log paper to plot this graph and not an ordinary graph paper. If we use the ordinary graph paper, then the size of the graph paper would be very large. So we are using a semi-log paper. I will repeat, semi-log paper. Now if we look at the frequency response, we observe that the output voltage is constant. Output voltage is constant for frequencies from frequencies 0 to say some frequency f2 Hertz. So what is our observation? The output voltage is constant. If output voltage is constant, means the gain is constant. So the gain is constant from 0 to some frequencies, say f2, means the frequencies which are less than 20 Hertz or 10 Hertz. Means every frequency which is less than 20 Hertz or 10 Hertz will be equally amplified, and after 20 Hertz there will be a reduction in the gain, and hence we will see that the graph is reducing. The graph is reducing means the gain is reducing, gain decreasing, the gain is reducing as frequency is increasing. The gain is reducing means output voltage is reducing, and if the output voltage is reducing means the gain is reducing as the frequency is increasing above the f2 for example, say 20 Hertz or more. So the gain roll off at high frequency, this roll off at high frequency means the frequency more than 20 Hertz is due to the increase in the, this is all because of the increase in the emitter diode, emitter, I repeat the word emitter diode capacitance and stray capacitance, stray wiring capacitance. So we know that the function of the capacitors is to block the DC and allows the AC, but here as we are not using any output coupling capacitor, but because of the emitter diode, means the capacitance between the base and the emitter, the capacitance between the base and emitter means I will just try to mark like this, the capacitance between base and emitter terminal here also and here also, and the capacitance between all these wirings, these parallel wires, these parallel wires and these parallel wires. So these are called as stray wiring capacitance.
So these two parallel wires forms a capacitor. These two parallel wires forms a capacitor. These two parallel wires forms a capacitor. So everywhere these wires are forming a capacitance, and it is called as stray wiring capacitance. And the capacitance which is formed between the base and the emitter terminal is called as the emitter diode capacitance. So because of the increase in the capacitance, the gain is reducing, and hence we are obtaining roll off, means decreasing in the gain as the frequencies are increasing. So जैसे जैसे frequencies increase हो रही है, तब हमारा एमीटर और बेस टर्मिनल के बीच में जो कैपेसिटेंस हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, जिसको हम लोग एमीटर डायोड कैपेसिटेंस बोलेंगे, या फिर जो वायरिंग्स के वजह से जो कैपेसिटेंस तैयार हो रहा है जिसे हम लोग स्ट्रे वायरिंग कैपेसिटेंस बोलेंगे, ये कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। इसके वजह से वो डीसी जो भी फ्रीक्वेंसीज है उसे वो ब्लॉक करेंगे और हमें आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए हमारा जो गेन है वो रिड्यूस हो रहा है। दे आर ब्लॉकिंग द डीसी फ्रीक्वेंसीज एंड हेंस द गेन इज reducing. So this is all about the frequency response of a DC coupled, two-stage DC coupled amplifier. So the bandwidth is equals to highest frequency is f2 minus 0. So the bandwidth is f2 hertz. And this bandwidth is very, very small. Now what is the actual meaning of here? The bandwidth is the operating range of this amplifier. So the operating range at which the gain is constant is called as bandwidth, or we can say bandwidth is also defined as the difference of higher frequencies and the lower frequency. Higher frequency is f2, lower frequency is 0, hence we have written bandwidth is equals to f2 minus 0, that is f2 hertz. So this is about the bandwidth. Now we will study the advantages of this DC coupled amplifier. First advantage is that the circuit is very, very simple. There are no capacitors and no transformers, nothing. This is RL and here we have V0. So no capacitors, no transformers, nothing. So the circuit design is very, very simple. And hence, and here we have used a lot of number of resistors, but we can reduce the number of resistors also. Means we can remove these resistors, and hence the circuit becomes more simple and more cost effective. So second advantage, the circuit is cost effective circuit. Moreover, why the circuit is cost effective? Because resistors are less and the capacitors no capacitors, no inductors and no transformers. Hence circuit is very, very cost effective and circuit is very, very simple. And third and the very important advantage of this circuit is that it can amplify very low frequency signals from 0 hertz. From 0 hertz means it can amplify the DC signals also to approximately 10 hertz to 15 hertz to 20 hertz. That's it. So advantages ये है, सबसे मेन इम्पोर्टेंट एडवांटेज ये है कि जो बहुत ही कम फ्रीक्वेंसीज होती है 0 हर्ट्स यानी DC वोल्टेज से लेकर
10 से 15 या मैक्सिमम 20 हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी है उसे ये एम्पलीफाई कर सकता है। सेकेंड थिंग कि हम लोग इसमें से ये जो सेकेंड स्टेज के जो बायसिंग रजिस्टर्स है वो यहाँ से निकाल सकते हैं, जिसकी वजह से कंपोनेंट्स का साइज और कम हो जाएगा, कंपोनेंट्स कम हो जाएंगे। इसमें कोई भी कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स या फिर ट्रांसफार्मर्स का यूज़ नहीं है। इसकी वजह से सर्किट बहुत ही सस्ता है, कॉस्ट इफेक्टिव है एंड सर्किट की डिज़ाइन भी बहुत ही सिंपल है। दैट्स इट, ये इसके मेन एडवांटेजेस। Now we will be discussing about the disadvantages of two-stage direct coupled amplifier. So the very first disadvantage of this DC coupled amplifier is that it cannot amplify high frequency signal. High frequency signal here we refer the high frequency signals which are more than 20 hertz. So this is the biggest disadvantage, but the main advantage of this amplifier is that it amplifies low frequency signal. That is, it amplifies frequencies in the range of 20 from 0 to 20 hertz, and this is the main advantage. Next is that it has poor temperature stability. Why poor temperature stability? Because if we remove the resistors R1 and R2, that means these are the biasing resistors, voltage divider biasing resistor, still the circuit will act very good as DC coupled amplifier, as a DC amplifiers. But if you remove resistors R1 and R2, then it will affect the biasing conditions of the amplifier. Hence, we have written it has poor temperature stability. To use minimum components, if you remove this, and this will affect the temperature stability. And if the temperature stability is affected, the operating point also called as Q point will be shifted. Now what is the meaning of operating point? So we have to go back and we have to remember the thing load line, DC load line as well as AC load line. Here on the x-axis we have VCE, and here it is collector current, and the line is this DC load line. If the operating point is located exactly at the center of this DC load line, then we will obtain a faithful amplification. Means whatever we are giving the input, say whatever we are giving the sine wave as the input, we will get the amplified sine wave with the same frequency and all that. But if because of the temperature stability, if this Q point is shifted towards the cutoff region, or if it is shifted towards the saturation region, then either we will not get positive half cycle or some portion of it, or we will not get some portion of negative half cycle of the input AC. So the point is, when we remove these biasing resistors to make circuit more simple, more cost effective, it affects the operation of the circuit, and because of that it becomes temperature dependent, and because of this temperature the beta or the current gain varies, and hence we can say that the Q point or the operating point varies to cutoff or to the saturation region.
Hence, we will try to make it temperature stable, and to make it temperature stable, we will use a voltage divider network or a voltage divider biasing. Means this full circuit arrangement has to be there. Now, as all integrated circuits amplifiers are DC coupled, as all the IC based amplifiers are DC coupled. Why they are DC coupled? Because we have a difficulty in fabrication of capacitors. So the point is, what are the main disadvantages? First thing, ये जो 2-stage डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर है, ये हाई फ्रीक्वेंसी पे काम नहीं कर पाएगा. इसका गेन हाई फ्रीक्वेंसीज पे ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है. हाई फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसीज जो 20 हर्ट्ज से ज्यादा है. उसके बाद हम लोगों ने देखे कि अगर हम लोगों ने बायसिंग रेजिस्टर्स निकाल दिए सेकंड स्टेज के, तो सर्किट तो सिंपल हो जाएगा, रेजिस्टर्स कम लगेंगे, लेकिन उसके वजह से टेम्परेचर का इफेक्ट इस एम्पलीफायर के ऊपर होने वाला है. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारा करंट गेन वैरी होगा. करंट गेन वैरी होगा तो आउटपुट वोल्टेज वैरी होगा. आउटपुट वोल्टेज वैरी होगा तो हमारा जो ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट या फिर जो क्यू पॉइंट है वो सैचुरेशन या फिर कट ऑफ की तरह शिफ्ट हो सकता है. यह शिफ्टिंग होने के वजह से हमारा जो इनपुट पॉजिटिव साइकिल है, सॉरी, हमारा जो आउटपुट पॉजिटिव साइकिल है या फिर आउटपुट नेगेटिव साइकिल है, उसका कुछ पोर्शन कट हो जाएगा. हो सकता है पूरा का पूरा पॉजिटिव साइकिल कट हो जाए या फिर पूरा का पूरा नेगेटिव साइकिल कट हो जाए. कब? जब ये सर्किट टेम्परेचर के वजह से माल फंक्शन या फिर मिसबिहेव करेगा. तो उसके लिए हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हम लोग ये प्रॉपर सर्किट यूज करेंगे. तीसरी चीज हम लोग ये देखते हैं कि जितने भी आईसी बेस्ड एम्पलीफायर्स है, आईसी बेस्ड एम्पलीफायर्स, उसके अंदर हम लोग कैपेसिटर्स का यूज नहीं कर सकते, बिकॉज कैपेसिटर का आईसी के अंदर फैब्रिकेशन करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है. तो हम लोग सिर्फ डीसी कपल्ड एम्पलीफायर्स ही आईसीज में बना सकते हैं. आरसी कपल्ड एम्पलीफायर्स या फिर ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर्स आईसी में नहीं बना सकते. तो ये बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है कि हम लोग सिर्फ डीसी कपल्ड एम्पलीफायर डिजाइन कर सकते हैं, और अगर आईसीज में टेम्परेचर का वेरिएशंस हो जाए तो फिर तो हमारा आउटपुट ड्रास्टिकली खराब हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड मिलेगा. डिस्टॉर्टेड यानी अगर हमारे जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है या फिर नेगेटिव हाफ साइकिल है, उसका कोई भी पार्ट क्लिप हो रहा है, कट हो रहा है, तो हम कहेंगे कि उसमें डिस्टॉर्शंस आ रहे हैं. तो ये सारे हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर. नाउ वी विल सी द एप्लीकेशंस ऑफ डीसी कपल्ड एम्पलीफायर. सो जो अभी हमारे डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर है, उसके मेन 4 एप्लीकेशंस हैं, और ये चारों के चारों एप्लीकेशंस वहां पे है जहां पे हम लोग के जो इनपुट सिग्नल्स है, इनपुट सिग्नल्स जो है वो स्लो वेरिंग सिग्नल्स है. स्लो वेरिंग सिग्नल्स. सो स्लो वेरिंग सिग्नल्स मीन्स वेरी लो frequency signals. So the main applications is that DC coupled amplifiers are used in specially electronic systems where they handle signals which changes very slowly with respect to time.
For example, a very low frequency signal, very low frequency signals in the range of, again I am repeating, signals in the range of 0 to 20 hertz. It can be down to 0 hertz itself. So basically, these slow varying signals are analog signals, and for that we require some kind of calculation, computations, or signal processing. So we use the term that DC coupled amplifiers are used for analog computation. As the very low frequency signals we are using, so as the signals are very low, they are called as analog signals. Okay, now from where we will get this very low frequency signals? So this very low frequency signals can be a noise signal or some kind of signals which are randomly generated by any active or passive device. Okay, now it can be generated by our human body. Hence the term is given bioelectric signal measurement or biomedical signal measurement. Now what is the meaning of biomedical signals? For example, the signals which are generated from heart, generated by brain. So the signals generated by hearts are in the shape of like this. And the signals which are generated from the brain are like this. So the frequencies are very, very low. Say maximum frequency 12 hertz, not more than that. So to amplify such signals from brain or heart, we require the DC coupled amplifiers. So जो भी सिग्नल्स हमारे हार्ट या फिर ब्रेन से जनरेट हो रहे हैं, उनका जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही कम है. तो इनका अगर एम्प्लीफिकेशन करना है, इनको मेजर करना है, इसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करनी है, तो हम लोग डीसी कपल्ड एम्पलीफायर यूज करेंगे. देन नेक्स्ट, पावर सप्लाई रेगुलेटर्स. नाउ वी नो दैट इन आवर domestic supply, domestic means in our homes, frequency is 50 hertz. Now this frequency is very, very less, and if there is variations, fluctuations in the domestic supply at our homes, then to maintain a constant amplitude level of this very low frequency signal, we require a regulated power supply, especially AC. For domestic home appliances, we require AC power supply, and the appliances which works on DC, we require DC regulated power supply. In our home, all the appliances are AC, and these AC appliances must not get damaged because of the voltage fluctuations. To maintain the voltage fluctuations, we require power supply regulators, and as the frequency is very less, up to 50 hertz, that's why we require a two-stage direct coupled amplifier. And third is the linear integrated circuits. Yes, of course, it is very easy to fabricate a DC coupled amplifier in the ICs which works on low frequencies, because we cannot use, or we cannot fabricate capacitor based amplifiers. So we will use a linear ICs based, which uses a direct coupled amplifier, because it is very easy to fabricate resistor, but we cannot, it is difficult to fabricate capacitors, and hence DC coupled amplifiers are generally used in linear integrated circuits. So once again I will repeat in Hindi. जो DC coupled amplifiers है वो एनालॉग कंप्यूटेशन यानी एनालॉग सिग्नल्स जिनका फ्रीक्वेंसी कम है उनके ऑपरेशंस के लिए हम लोग यूज करेंगे. यानी कोई उनके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसके लिए हम लोग यूज करेंगे. दूसरे जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स है जो हमारे ब्रेन एंड हार्ट या फिर हाथों से सिग्नल, जो बॉडी के सिग्नल्स है, उसको अगर मेजर करना है तो हम लोग उसे कहेंगे बायो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स. उसको मेजर करना है तो एम्पलीफाई करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग डीसी कपल्ड एम्पलीफायर यूज करेंगे. घर में जो हमारे वोल्टेज सप्लाई आ रहा है 230 वोल्ट्स AC, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, करंट 5 एम्पियर्स, फ्रीक्वेंसी कम है 50 हर्ट्ज, और इस कम फ्रीक्वेंसीज में अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं
तो उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग एसी पावर रेगुलेटर्स यूज करेंगे, जो ये डीसी एम्पलीफायर्स का यूज करेंगे। और चौथा जो है वो है लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स। लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स में जनरली ये होता है कि हम लोग कैपेसिटर्स का फैब्रिकेशन नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर जो है आईसीज में फैब्रिकेट कर सकते हैं। तो हम लोग उसको नाम दिए कि डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर्स आर यूज्ड इन लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स for the processing of analog signals or for the processing of DC signals. So this is all about the two-stage direct coupled amplifier disadvantages and applications. There can one more be combination of a two-stage DC amplifier, and it can use complementary, symmetry transistors. For example, I will draw a very short circuit. Means here we will use normal our NPN transistor, and the output will be coupled to the PNP transistor. So this is called as two-stage DC amplifier using the complementary symmetry configuration. So this is a NPN transistor and this will be the PNP transistor. But this transistor is beyond the scope of the curriculum, so we are not covered in this session. We will cover this in next session if required. So what is the meaning of complementary symmetry? Complementary means one transistor will be NPN, other transistor will be PNP. Means here Q1 can be NPN and Q2 will be PNP. Why symmetrical? Why symmetrical? Symmetrical means their electrical parameters, their working electrical parameters, their current gain, their beta, everything will be exactly same.